Okay, so this is chapter number 6 in chemistry, chemical reactions. We have already, done this definition in language of chemistry, but again, please underline this if it is in your textbook. When one or more substances as in elements or compounds, undergo a chemical change with the absorption or release of energy so as to form one or more new products, then the change taking place collectively is called a chemical reaction. Example: H2 plus O2 gives 2H2O. In fact, it is 2H2 plus O2 gives 2H2O. This is a balanced chemical equation of the chemical reaction taking place between hydrogen and oxygen. Now, what are hydrogen and oxygen called? They are elements. So here two elements are reacting with each other and they are forming a new substance which is known as a compound. You have studied such similar chemical equations and reactions earlier as well. But here we should focus on the definition which says that when two or more substances react with each other and they either absorb or release energy, what they form is a new substance. Okay, it's a new substance. They form one or more new substances, and this change is known as a chemical reaction. And this whole thing is known as a chemical reaction. So, for a chemical reaction to take place, the following things are necessary. There must be one or more substances to take part in chemical reaction. There must be release or absorption of energy during a chemical reaction, and there must be one or more new substances formed during a chemical reaction. So here in this reaction, heat energy is absorbed. You have to pass electric current. So energy in terms of electricity, not heat, electricity is required to proceed this chemical reaction further. Okay, there are two substances which react with each other in the presence of some external energy and a new substance is formed. The new substance is water. Remember, new substance is water, which is entirely different from the substances which are making it, that is the reactants. Water is liquid, hydrogen and oxygen both are gases. Water is neither a supporter of combustion nor combustible itself. It is an extinguisher. But hydrogen and oxygen both are supporter of combustion as well as, sorry, combustible as well as supporter of combustion respectively. So the properties you see of the reactant and products are entirely different. So that means a new substance is formed, and that is a sufficient, you can say, proof of chemical reaction being uh, undergoing, okay, over here in this example. So there are some types of chemical reactions which we are going to study. So let me just list the types over here for you, and then I will teach you, so it will be easier for you to understand. Number one is combination reaction. Now the name itself suggests what it means: combination reaction. So here if you want to remember what is combination reaction, just remember this: A plus B gives AB. Two substances, two elements or two compounds, they
two or more compounds or two or more elements, they combine with each other to form one new substance. Okay, the same thing was happening in the case of hydrogen and oxygen. This is a classic example of combination reaction. So you can remember combination reaction with this thing. You can note it down if you want. Combination reaction. The second one is decomposition reaction. In decomposition reaction, you have a compound and it breaks down into two or more simpler substances. So it is exactly opposite of combination reaction. Decomposition, breaking down, breaking up of a compound into two or more simpler substances. We will see the examples of each and every type, but for your preliminary knowledge, you should keep these things in your mind. Okay, decomposition reaction, then comes displacement reaction. Now, what is displacement? A plus BC gives AC plus B. So what happens over here? If you see, A was an element which was added to a compound BC. After reaction, B becomes an element from the compound. It is eliminated. It is, you can say, separated, or it is displaced from the compound, from its compound, and AC now becomes the new compound. So you can say there is a displacement happening. Okay? This is a displacement reaction. Then the fourth one is double displacement or double decomposition. In different books, there are different terms for it. Double displacement or double decomposition reaction. In this, we have AB plus CD, which gives us AC plus BD. If you see, the ions have swapped their places. B has taken the place of C and C has taken the place of B. So it has now become AC plus BD. Both have displaced each other. That means they have swapped their places. Right? So this is double decomposition. Please note it down. This double decomposition reaction is also known as, very famously, precipitation reaction. And I'll tell you why. And the last one is redox reaction. Redox, that is reduction and oxidation. Redox reaction, in which oxidation means, suppose there is a reaction in which oxygen is getting added to a substance or hydrogen is getting removed from a substance. They both are oxidations. Oxygen is getting added or hydrogen is getting removed. I will write here addition of oxygen or removal of hydrogen, that is oxidation.
Okay, so this is a special type of reaction, oxidation. This comes under redox reaction. Then there is one more, which is reduction reaction. Reduction. Reduction is removal of oxygen. Removal of oxygen and addition of hydrogen. That is okay. So these are some, you can say, examples of chemical reactions which we are going to study in this chapter. Total 5 types. I don't know how much each type is given in detail, but yeah, there are many examples which we have to study. Okay, let's go and start with. Okay, so the first definition over here is of combination reaction. See the definition. When two or more elements or compounds react chemically to form one new product only, then the reaction is called chemical composition or chemical combination reaction, or simply combination reaction. So A plus B gives AB. This is the classic formula for combination reaction as I gave you. Right? Let's see the examples. The first example is of two elements mixing with each other or reacting with each other to form a compound. So here we see carbon and oxygen. Carbon is present in any combustible substance like coal or petroleum. So that carbon reacts with oxygen, which is an element present in air, to form carbon dioxide. So any combustion produces this reaction. Combustion means burning. Burning of any sort produces this reaction, and this is the formation of carbon dioxide, which is example of combination reaction. Hydrogen, which is an element, chlorine, which is an element, reacts with each other to form hydrogen chloride gas, which is also an element. Again, example of combination reaction. Magnesium, magnesium ribbon, basically magnesium comes in the form of ribbon. When it is heated in flame, it catches fire. It reacts with oxygen of air, catches fire, and it produces, grayish white powder. That grayish white powder is magnesium oxide, which is a compound. So combination reaction again. Then one more example is when iron is heated with sulfur, it produces iron sulfide, a black color substance. This is also example of combination reaction. But all these examples have one thing in common. Do you know what is that? In all these examples which they have given over here, I'm going to share this PDF with you if this is not in your book, but because these examples are very important and they can be asked in the exam. So for all these example, one thing is common, that is element plus element gives us a compound. Element plus element gives us compound. ठीक है, दो एलिमेंट को मिलके एक कंपाउंड बनता है. दैट इज द कॉमन थिंग बिटवीन ऑल दीज 4 reactions. All these are types of combination, but there are more.
See, there are more. When an element reacts with a compound to form a new compound, we have carbon monoxide which burns in oxygen to give carbon dioxide. So what is an element here? Oxygen. But what is a compound over here? Carbon monoxide. And they form a new compound. So we have a compound plus an element making a new compound. Compound plus element making a new compound. They can ask you a question like this in the exam. Give an example of combination reaction where a compound and element combines with each other to form a new compound. Then you have to memorize these examples. Carbon monoxide plus oxygen gives carbon dioxide, and you have to write balanced chemical equation also for them. So I will ask these kind of questions in my test. Okay, be prepared for that. Then lead monoxide, PbO, plus oxygen, which is an element, gives red lead. Red lead is Pb3O4, lead oxide. Then nitric oxide, NO, reacts with oxygen. Nitric oxide is, remember, nitric oxide is colorless gas. ठीक है? When it reacts with oxygen, it forms a reddish brown gas which is nitrogen dioxide. So sometimes, not sometimes, you are in ICSE and one thing is sure that in class 9th and 10th, whatever chemistry you are going to get, it is based on lot of memorization. So you need to remember the colors. Remember when I tell you nitric oxide, it is colorless. If you want, you can note it down. Nitric oxide is colorless. It forms nitrogen dioxide, which is reddish brown color gas. See, by now you should know some colors of some compounds. जैसे nitric oxide colorless है, nitrogen dioxide reddish brown है. Let's check how many colors do you know in chemistry. Can you tell me the color of copper sulfate? Actually, it is with water of crystallization, hydrated copper sulfate. Can anyone tell me the color of it? किसी को पता है कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? इट इज ब्लू. नोट करो. इफ इट इज FeSO4.7H2O, the color is green. ठीक है. देन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कलर क्या है इसका? आदित्य, बताओ ना. अबे व्हाइट कलर का होता है, मार्बल है. कैल्शियम कार्बोनेट इज मार्बल. ठीक है. ब्रोमीन वेपर्स, रेडिश ब्राउन. क्लोरीन, येलोइश ग्रीन. ये गैस की बात कर रहा हूं मैं. तुम वो क्लोरीन, वो जो स्विमिंग पूल में डालते हैं, उसका कलर बताया ना मेरे को, है ना? है ना? आई न्यू इट. वो क्लोरीन नहीं होता बेटा, वो ब्लीचिंग पाउडर है. ब्लीचिंग पाउडर इज वाइट. यू नो द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर जो स्विमिंग पूल में डालते हैं? केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ये व्हाइट कलर का होता है. तुम्हें फिर कुछ कॉमन नेम्स भी याद रखने पड़ेंगे. ये तो कलर्स हो गए. कलर तो बहुत है, ये तो कुछ नहीं है. ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारा ऐसे प्रिलिमिनरी पूछा है कुछ जो मुझे याद आ रहा है. ठीक है. टेल मी व्हाट इज कॉस्टिक सोडा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड.
कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूले, ये सब लर्न करना है तुम्हें 9th और 10th में अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो। कॉस्टिक सोडा है, फिर लाइमस्टोन है। बताओ लाइमस्टोन क्या होता है? सर CaCO3। यस, मार्बल लाइमस्टोन, CaCO3। फिर लाइम क्या होता है? लाइम, सर ग्रीन। सर स्लाइम ग्रीन। मैं कलर नहीं पूछ रहा हूं गधे। ओके। कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड लाइम वाटर। अभी नींबू पानी मत बोल देना यार। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब ना कॉमन नेम्स और केमिकल फॉर्मूले, केमिकल नेम्स, ये सब तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसकी एक लिस्ट दूंगा, ठीक है? उसको संभाल के रखना और रोज उसको पढ़ते रहना। तुम्हें ये याद होना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं। ओके, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों कंपाउंड है, ये दोनों मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कभी पिया है तुमने कार्बोनिक एसिड? पिया तो होगा ही। सब लोग यही पी पी के अभी ये सीजन में। दैट पेप्सी एंड ऑल। सॉरी, यस एग्जैक्टली, दिस इज योर carbonated drinks. All soft drinks, they have carbonic acid in them. ठीक है? ये देखो, क्विक लाइम, अभी मैंने पूछा था ना लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बताया था मैंने, क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? सर लाइम वाटर। Yes. So this is also combination reaction. Then ammonia plus hydrogen chloride gives ammonium chloride. Ammonia plus hydrogen chloride gives ammonium chloride. अमोनिया का स्मेल लिया है किसी ने? हाँ? अरे क्या झूठ बोल रहे हो यार, इतना झूठ तो मत बोलो। वो कैंसर। नहीं, कैम्फर नहीं है अमोनिया, कुछ भी मत बोल। कभी तुम पब्लिक टॉयलेट्स में गए हो? रेलवे प्लेटफॉर्म वाले? यस नहीं गए, कभी नहीं यस यस म- सर। ओ, हेलो केया, यू नेवर बीन टू अ पब्लिक टॉयलेट ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म? पास से तो, बाहर से तो गुजरे रहेंगे ना यार। कभी स्मेल आया है वहां से? वो जो स्मेल है वो अमोनिया का है, ठीक है? याद रख, अभी तो कभी नहीं भूल सकते। केमिस्ट्री को इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। यू कैनॉट स्टडी केमिस्ट्री विद सीरियसनेस, इट हैज टू बी फन, अदरवाइज यू फॉरगेट एवरीथिंग। अभी पब्लिक टॉयलेट देख के तुरंत क्या याद आएगा सबको? अमोनिया। ओके। केमिकल डीकम्पोजिशन और केमिकल डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये मैंने अभी बताया था तुम्हें। ए बी गिव्स ए प्लस बी, एक कंपाउंड ब्रेक होके दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका सबसे पहले डेफिनेशन दिया है। व्हेन अ सिंगल केमिकल कंपाउंड decomposes on heating or by some other kind of energy so as to form two or more new substances, elements or compounds,
then the chemical reaction which takes place is called chemical decomposition reaction. Example क्या है? When a chemical compound decomposes into elements, into two elements. तो जैसे हमारे पास एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड है कंपाउंड, उसको हीट करने पे मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है. सो वी हैड अ कंपाउंड, note that we had a compound and it got converted into two elements. This is decomposition. Then जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया उसका उल्टा, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Then when a chemical compound decomposes into one element and one compound, we have got sodium nitrate. When we heat it, it gets converted into sodium nitrite, which is one more compound plus oxygen. If we have potassium chlorate and we heat it, we get potassium chloride and oxygen. So this is also kind of decomposition. Then when a chemical compound decomposes into two new chemical compounds, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या था ये? लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो यू गेट लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर. डीकंपोजिशन रिएक्शन. इसके बाद है केमिकल डिस्प्लेसमेंट और केमिकल रिप्लेसमेंट रिएक्शन. When more electropositive elements displaces a less electropositive elements from its aqueous solution, the reaction which takes place is called chemical displacement reaction. जैसे हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, राइट. अब ये जो पूरी सीरीज है ना, इसको हम वर्टिकली लिख देते हैं, ठीक है? वर्टिकली तुम भी लिख सकते हो इफ यू वांट. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद ब्रैकेट में हाइड्रोजन है, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, और लास्ट में गोल्ड और प्लैटिनम भी डाल सकते हो तुम. तो ये जो चीजें है ना, ये जो एलिमेंट्स है, these are said to be called wow, these are known as reactivity series of metals. Reactivity series of metals. In this reactivity series, as you go down, no, platinum will be at the last. Platinum is more expensive than gold. More unreactive than gold. So as you go down, the reactivity decreases. As you move down, the reactivity decreases. मतलब जो नीचे वाला एलिमेंट है वो ऊपर वाले से लेस रिएक्टिव होगा. सो जस्ट टेल मी हु इज मोर रिएक्टिव. तुम्हें कंपैरिजन करनी है, ठीक है? अरे हाँ, पोटेशियम तो मोस्ट रिएक्टिव है. कंपैरिजन में जो दो एलिमेंट दूंगा उनके बीच में करना है. मैग्नीशियम एंड आयरन, हु इज मोर रिएक्टिव? वेरी गुड, बिकॉज मैग्नीशियम इज अबव आयरन. जिंक और कैल्शियम, कैल्शियम. वेरी गुड. लेड और कॉपर, वेरी गुड. सोडियम और एल्यूमिनियम, करेक्ट. सो तुम कैसे पता लगा रहे हो? यू आर जस्ट लोकेटिंग द एलिमेंट्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज, locating the position of the element. whichever element is higher is more reactive. सिंपल. जो एलिमेंट ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? तो क्या होता है, हमेशा याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज
रिएक्टिविटी सीरीज का एप्लीकेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें ये केमिकल रिएक्शन दिखाता हूं और इससे समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। सो सपोज जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। नाउ इसमें मेटल्स किधर है? एक मेटल है जिंक, दूसरा मेटल है कॉपर। हु इज मोर रिएक्टिव? कंपेयर। हु इज मोर रिएक्टिव? Sorry? Yes, zinc is more reactive than copper. If zinc is more reactive than copper, what will happen? Zinc will displace copper from its salt solution. तो zinc copper को हटा के zinc उसकी जगह ले लेगा, कॉपर सल्फेट की जगह वो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को वो हटा देगा साइड में। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू रिमेंबर मैंने तुम्हें बताया था A plus BC gives AC plus B, याद है? डिस्प्लेसमेंट देखो Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे दो मेटल कौन से हैं? Fe और Cu, और Fe और Cu में आयन और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? हाँ, iron, correct. Fe is more reactive. So Fe displaces copper from its salt solution, becomes FeSO4 and copper is displaced. ठीक है, अब इसमें एक रिएक्शन है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये रिएक्शन। Iron and copper sulfate reaction. Oops. तो मैंने तुम्हें बताया था, याद है? कॉपर सल्फेट का कलर पूछा था मैंने, क्या बताया था कॉपर सल्फेट का कलर? यस। तो ये तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट है एक बीकर में, ब्लू कलर का सोल्यूशन है, उसमें मैंने डाला एक आयन का ब्लेड। ठीक है, ब्लेड आयन का था, इसके लिए क्या किया? आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ये सोल्यूशन अब बन गया आयन सल्फेट का। आयन सल्फेट जैसे ही बन गया ये ग्रीन कलर का हो गया और ब्लेड के ऊपर ब्राउन कलर की पूरी डिपॉजिट हो गई। ये डिपॉजिट रस्ट नहीं है, ओके, दिस डिपॉजिट इज नॉट रस्ट, दिस डिपॉजिट इज ऑफ कॉपर। कॉपर डिस्प्लेस होके वो ब्लेड के ऊपर पूरा डिपॉजिट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयन। ठीक है, जो हमने कहां पे देखा था? इधर Fe plus CuSO4 वाले। अच्छा, और एक चीज है, इसी वजह से जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन से मेटल्स है? पहले तो हाइड्रोजन कहां पे? ये रहा। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। किसमें से? एसिड्स में से। सो जिंक जो हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड and it gives zinc sulfate and hydrogen. Displacement reaction. FeSO4. Yes. Used for galvanization. Yes, it is. So then it is reacting
it is reactive. That's why they are using, because once it rusts, its rust is a very strong and very sticky substance. Once zinc's outside layer gets rusted, it does not let the air penetrate itself. So it is a sacrificial process. Zinc gets rusted on its own and protects the iron pipe or object from getting rusted further. Yeah, that's why zinc is used in galvanizing. Okay. Then yeah, one more reaction is there, which is FeSO4 plus Mg gives MgSO4 plus Fe. Why this reaction took place? Because Mg magnesium is higher than in position in reactivity series than iron, and that's why magnesium displaces Fe from its salt solution. Okay, then comes the second last one, I think. The chemical, I cannot speak much, my throat is aching a lot. So I'll try to, complete as much as I can. Actually, this is too much. Can we do it tomorrow by any chance? Can we finish it tomorrow? Yes, sir. Okay, I'll give little rest to my throat. Okay, let me just stop the recording.